Good evening, my beauties. How are you all doing? I hope it's crazy, glamorous, and fashionable. Welcome to this part 2 vlog of fashion show. Also, अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो पहले जाकर वो देखो. तो यहाँ शुरू हो चुके हैं रिहर्सल्स. So your girl is at Nirma. I don't know मैं यहाँ पे कितने टाइम बाद आई हूँ. First time after my undergrads, I think. तो करीबन 3-4 साल हो गए हैं. And I feel so young and so old at the same time क्योंकि यहाँ पे काफ़ी कुछ change हो चुका है. So I am here with Monishka because she is in the last year of graduation and she has participated in this fashion show competition. I don't know what the fest looks like. I don't know anything about the sponsors, which college has organized. कुछ भी मुझे कोई भी I don't know any details because it was very last minute for me to come here and I am really enjoying because I feel like ये vibe ना चली गई थी after corona and when we were into my post graduation days exam देने के लाले पड़े थे. So ये fest ये हरियाली हमने तो मतलब online में I don't feel the vibe. This is pure vibe. This is pure bliss. This is where the actual networking happens. This is where it's vibe. हम हैं 2023 में और एक लड़का और एक लड़की बिल्कुल दोस्त हो सकते हैं. डोंट जज यू प्रिटी पीपल. अब हम आ चुके हैं निर्मा के मैग्नानिमस क्लासेस में. एग्जाम्पल ऑफ सबका साथ सबका विकास. अब हम होने वाले हैं रेडी फॉर द फैशन शो. लेट्स गेट स्टार्टेड. फैशन शो में सिर्फ फेस पेंट नहीं करना होता है, आपको अपनी बॉडी के जितने भी पार्ट्स दिख रहे हैं उन सबको पेंट करना होता है. टू कॉस्टली अफेयर बेबी. बॉडी पॉजिटिविटी के नाम पर कितनी भी अवेयरनेस फैला दो लेकिन यू स्टिल गॉट अ कॉन्टोर एंड हाइड दैट ब्लडी फकिंग ब्लडी डबल चिन एंड लुक स्मार्ट एंड एजी एंड डस्की. Jokes aside, I'm using my favorite Blush Bliss contour stick from Blue Heaven and blending it very well. लवीना मेकअप फिक्सर दे. हाँ, तो जब आपको ट्रैवल करना होता है मेक श्योर दैट यू कैरी योर मेकअप फिक्सर क्योंकि मुझसे वहाँ पर 4 लोगों ने फिक्सर मांगा. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फिक्स योर बेस. आई एम यूजिंग फेसेस कैनेडा का फिक्सर. दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट्स एंड स्पेशली व्हेन इट्स एन आउटडोर इवेंट यू डू नॉट वांट टू लुक लाइक मंजूलिका. यू शुड नॉट फॉरगेट a makeup fixer, a good makeup fixer instead. Also, I am using a translucent powder to fix my base. I'm using 4 different eyeshadow palettes to create the perfect shade on my eyes that matches my designer costume. एकदम edgy. देख ऐसा edgy. उसका लाइनर तो लगेगा ही है ना. बोल रही है पूछ रही है. हाँ ठीक है. तूने मेरा वो पर्पल कलर के जो गाउन में है वही कर लो. पर्पल कलर का ग्रे कलर का लेंस. पर्पल पिंकिश लुक है. पिंक शिमरी लुक. पिंक शिमरी इसमें अच्छा लगता है. हाँ इस पूरा गोल्ड स्टाइल कुछ नहीं अच्छा लगेगा. मेकअप का मेकअप ब्रेक शिमर नहीं जाऊँ. तो जाती है जाना रहती है वो. शिमर इज़ वेडिंग ना. मुझे ऐसा लगता है. मतलब मुझे ऐसा. What do you want me to do? Bold, something that screams bold. What is bold according to you? Think of क्या बोलते हैं करीना कपूर looks. I'm trying my best. देखो कांस का दीपिका पादुकोण का लुक याद है ब्लैक में. मैं वैसा पर्पल में चली जाऊँ. और वो तो फिर उसके साथ तो पोनी टेल जाएगी और स्लीक हेयर जाएंगे. ये तो पॉम्पस है. मैं ऐसे बोल रही हूँ. स्नैच्ड भले जितना ग्राफिक्स में वो घुसना है ब्लैक में घुसो.
experiments. Yes, so conclusion of the story is no experiments. Go for something you're very confident about and also something that makes you look bold, sharp, edgy. तो यार बात ऐसी है कि मेकअप शेकअप एंड गेट रेडी विद मी तो चलता ही रहेगा, लेकिन व्हाट्स मोर इम्पोर्टेंट इज टू रिहर्स बिकॉज यू डू नॉट वांट टू ट्रिप on the stage. Ramp walk spaces, red carpet can be really tricky. आपने फैशन मूवी तो देखी है तो आपको पता है कि कांड होने के पूरे चांसेस होते हैं and I do not want to be one of them because not only can you get disqualified but it also brings shame. तो गिरना नहीं है is our rule 1. Bye bye. अब मिलते हैं सीधा फैशन शो में on the stage with all the तामझाम and lightings. So आ गई हमारी चमचमाती लड़की. Here's our girl. Please put your hands together for our girl Monishka. Kudos to Lavina Boutique for designing such an amazing outfit. Also, if you want to get your outfits customized, I'm leaving the link in description. तब तक के लिए आप enjoy कर सकते हैं ये walk. Cheers to mommy darling for helping in curating this outfit on the very last minute. You guys can follow us at the rate Lavina Boutique on Instagram. मुझे कमेंट में इस वॉक को रेट करके बताओ और बताओ क्या ये लड़की जीती होगी. How gorgeous this girl is. हाय हाय क्या बॉडी है. PHAT pretty hot and tempting बोले तो. इसी के साथ हम खत्म कर चुके हैं हमारा फर्स्ट राउंड ऑफ द फैशन शो विच वॉज इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेज. नाउ इट्स टाइम टू ब्रिंग अ कॉन्सेप्ट इन द शो. दिस इज अ ग्रुप फैशन शो और इनका थीम था वुमेन एम्पावरमेंट. नाउ पहले हमने देखा कि कैसे माला टूटती है. दिस टॉक्स अबाउट फेल्ड मैरिजेस. द सेकेंड वन इज दिस एंजल एंड डेविल थीम एंड यू सी हाउ ब्यूटिफुल वॉज दिस. Now this is women in working places and she removes. Yeah. ये वाला जो ग्रुप था ना, इसका कॉन्सेप्ट मुझे बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट लगा कि एवरीबडी इज़ टॉकिंग अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट बट नोबडी टॉक्स अबाउट इक्वालिटी. क्योंकि फेमिनिज्म सिर्फ वुमेन को एम्पावर करना नहीं है बट इट्स ऑल अबाउट इक्वालिटी. ये था प्राइड थीम पर. ना तो नर है ना तो नारी, अधूरा जीवन जीने की लाचारी, वजूद की तलाश में अपनेपन की आस में, भटकता गली गली अपने ही अंदाज में, तिरस्कार की नजरों को सहता है फिर भी कुछ नहीं कहता है. हाँ, किन्नर है वो.
तो यार जितनी भी तालियां ये देखो बज रही थी वो सारी की सारी ओरिजिनल थी. यू कैन सी हाउ एक्साइटेड द ऑडियंस वाज. थीम्ड फैशन शोज का फैन बेस अलग होता है एंड इट ऑलवेज कनेक्ट्स विद द ऑडियंस एट अ डिफरेंट लेवल. तो आफ्टर द क्लासिक ब्लैक व्हाइट वॉर एंजल एंड डेविल थीम फैशन शो हम चलते हैं एक इथनिक न्यू कलेक्शन लॉन्च की तरफ. Just like that, we are back home after the fashion show. It was a long and exhausting day, but it was equally fun and amazing. और आप देख सकते हो मेरा makeup closely, how this look turned out to be, and it is still intact after so many hours. This is the final look. तो यार मुझे बहुत ही मज़ा आया ये शूट करके, फिल्म करके, परफॉर्म करके. इवेंट was in total a lot of fun. अगर आपको भी इतना ही मज़ा आया ये व्लॉग देखकर तो प्लीज़ लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो. It takes a lot for us to create quality content for you guys. Thankful to GLS University and Nirma University for giving me this wonderful opportunity. So ये कुछ pictures है of all the people I met and I enjoyed with. I will see you in the next video. Bye bye.